पढ़ा है वो ये इस टाइप का था कि जो सेंसिबिलिटी है वो आपको डेटा देती है, वो जो फॉर्म्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको फॉर्म देती है। हाँ। तो अगर फॉर्म हमारा एक राय है तो उसके अंदर जो भी चीज़ आप डालेंगे तो वो ट्रू, हाँ हाँ, तो वो ट्रू हो जानी चाहिए। नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं होगी। और यही बात, सी दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल of again trying to analyze and finally distinguish, because what madam is saying is that if you were to say that sensation is providing you something, and then you have a forms of intuition, passive, and categories of understanding actively, and these are universal and necessary, then, and this is in any case the raw data which is directly being, then the two should be good enough to provide you with truth in every case. Why is it not happening? And then you have to say that here what we are doing is only giving you the conditions of cognitive significance. So a cognitively significant statement will be the one which has elements provided by experience, elements provided passively by the forms of intuition, and elements provided by the active faculty of understanding. But this is the principle of cognitive significance. A cognitively significant sentence will also be related to some theory of truth. Now, what are we saying about truth? In truth, we are saying that there are two kinds of truth: analytic and synthetic. And generally, we believe that analytic truths are always necessary in a priori, and synthetic are contingent and a posteriori. But Kant has this peculiar thing, which is in fact the most significant for him. And his whole enterprise is like that. That is, they should be synthetic and a priori. Therefore, here it becomes difficult that the a priori here, the a priori elements of contribution to knowledge and the a priori element of verification of the statement are not to be seen as the same. और इसीलिए मुझे लगता है कि कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप देखें कि एक एनालिटिकल फिलोसोफर्स जिसको अपनी हेरिटेज मान रहे हैं उसको ही जब हम इनके कैटेगरीज के साथ पलट के देखते हैं तो कितने फाइन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो हम लोगों ने इतने बरसों तक, समझिए 50 साल की, 100 साल की, 200 साल की, 100 साल की कम से कम ये ऑर्थोडॉक्सी थी कि एन ए प्राइमरी स्टेटमेंट इज द वन which can be justified without reference to experience, and a posteriori statement is the one which can be justified by reference to experience. Now Kripke draws our attention to the term can, and he says a priori statement के बारे में ये नहीं कहा गया कि which must be justified without reference to experience. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ए प्राइमरी जजमेंट है जो कोई लोग एक्सपीरियंस से जानते हैं और कोई लोग, और उसका एग्जाम्पल वो देते हैं कि मैं मानता हूँ कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं क्योंकि मेरी मिस ने बताया, और आप ये मानते हैं 2 और 2 4 होते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स से ड्रा करता है। तो वो है तो कंटेंट तो स्टेटमेंट का एक ही है, और लेकिन मेरा जस्टिफिकेशन है कि मिस ने बताया था और आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो आपके लिए वो ए प्राइमरी और मेरे लिए ए पोस्टीरियर है। इसका जवाब हम लोग जो देते हैं वो ये देते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट एक ही नहीं है। अगर कोई जना ये मानता है कि 2 और 2 4 होते हैं क्योंकि मम्मी ने कहा था, तो वो असल में वो मैथमेटिकल ट्रूथ नहीं जानता है, वो केवल एक एम्पिरिकल स्टेटमेंट जानता है कि 2 नारंगी और 2 नारंगी मिलकर 4 नारंगी हो गए, और मम्मी ने जब उसका जूस बना दिया तो वो एक गिलास जूस बन गया। तो वो उसका कंटेंट ऑफ नॉलेज भी अलग है। पर ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल डिस्कशन है क्रिप्के के बाद से, पूरा एनालिटिकल मूवमेंट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा ये माना गया कि नहीं वो बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर क्रिप्के इस बात सही कह रहे हैं और इस तरीके से एक ही स्टेटमेंट ए प्राइमरी और पोस्टीरियर एक ही जने के लिए 2 लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो फिर ये एक ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन नहीं बचेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और जॉइंटली एग्जॉस्टिव डिस्टिंक्शन ये नहीं रहेगी। पर क्रिप्के वगैरह कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप ही ने ये करा था और आप अपनी पूरी थ्योरी इसके ऊपर खड़ा करके बैठे हुए थे, आपकी पूरी थ्योरी विल फॉल फ्लैट। और वो लोग तो बहुत कीन हैं इस थ्योरी को फ्लैट करने के लिए,
क्योंकि वो क्वाइन के रिजेक्शन ऑफ एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन को मानते हैं। ये तो हम लोग जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं उनको ये मुश्किल हो रही है कि अगर हम सेम कंटेंट नहीं मानेंगे तो ये सारी डिस्टिंक्शन, एंड देयरफॉर यू फाइंड दैट where is it useful and where is it not useful, and therefore the time and the context of it, the distinctions are coming in Kant because of the immediate history, and the immediate history is of the conflict between the rationalists and the empiricists, and therefore he is wanting to find a kind of a more building up a bit big theory. Subsequently it changes the whole course. For him it is very important to give a justification for the kind of debates which are happening at that time, and therefore the analytic synthetic example becomes very, very important. Three things which I must remind you again. The distinction is very badly drawn. Predicate is contained in the subject is a very bad analogy. Contained कैसे हो सकता है subject में predicate? कोई डब्बा है जिसके अंदर रख दिया, it's a very bad thing. Secondly, all statements are either are subject predicate time. This is a bad assumption both in Leibniz and in Kant. The third thing is that as I mentioned yesterday or in the previous class, Kant is very heavily psychological, just as Hume is that. Predicate is contained in the subject, predicate is thought of in the subject, predicate is already thought of in the subject. All of that makes it hugely psychological and therefore opens the door for individual subjectivization and the others which we are now saying कि नहीं होना चाहिए. But Kant's own language is responsible for many of these confusions. Therefore, we have to take sometimes a charitable view. जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग पहले कम से कम आपको एक charitable view देते हैं कि किस तरह से उसका पूरा sense बनाया जा सकता है. But when you don't take a charitable view, तो उसके आगे फिर आप and when you take an objective analytical view, तो कांट में बहुत दिक्कतें हैं. हम लोग जब कांट की क्रिटिकल पीरियोडिज्म इस समय पढ़ रहे हैं तो हम लोग दोनों तरह की कोशिश कर रहे हैं. एक तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं और थोड़ा इस मेथड को भी इलास्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनालिटिकल मेथड से करके किसी टेक्स्ट को देखा जाता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है. तो अब आप ए प्रारय को इस मीनिंग में देखते हैं तो क्या होता है, ए प्रारय में नेसेसिटी और यूनिवर्सैलिटी को देखते हैं तो वो दो नहीं एक नज़र आ रही हैं. ए प्रारय एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज जब आप देख रहे होते हैं तो वो एक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है. ए प्रारय स्टेटमेंट के बारे में जब आप देख रहे होते हैं तो क्या होता है. और तीसरी बात जो मैंने आपसे मेंशन करी, ए प्रारय नोइंग ऑफ नेसेसिटी को अगर स्टेटमेंट का क्लेम मानते हैं या ए प्रारय नॉलेज ऑफ ट्रूथ को मानते हैं तो क्या होता है. सो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे पीएचडी करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं. नहीं तो बहुत आसान सी बात, वो तो आप बच्चे थे तभी आप जान गए थे, बीए में बता दिया गया था कि कांट की थ्योरी क्या है. उन्होंने अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव के अंतर्गत बुद्धि के विकल्प लगाए जाते हैं और वो एक तरीके से जैसे आप मठरी बना रहे हैं तो आटा भी चाहिए और आपको मठरी काटने का इक्विपमेंट भी चाहिए. तो जो बुद्धि है वो मठरी काटने का इक्विपमेंट है और वो संवेदनाएं जो वो आपको आटा दे रही. बट दैट सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वेरी गुड, यूजफुल एंड ट्रू अकाउंट. But when you look at the text, then you find that it's really not so simple. And philosophy, as students of philosophy, this is what we are doing. And this is what is exciting about it, that the reading of it can provide you with multiple meanings. Of course, we are still trying to, वो जो analytical thinkers भी हैं उनमें भी डेविडसन का एक principle है which we call the principle of charity. That when you are trying to understand something, then you grant that most of the statements are going to be true. क्योंकि अगर आपकी कोई एनालिसिस है किसी थियरी के बारे में और आप उसको पढ़ रहे हैं और उसकी ज़्यादातर चीज़ें फॉल्स होती हैं तो इसका मतलब आपने समझा नहीं वो क्या कह रहे हैं. हर्मेनॉटिक ट्रेडिशन में भी वो लोग इसी तरीके की बात करते हैं. वो उसको प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी नहीं कहते हैं, वो उसको हर्मेनॉटिक सर्कल कहते हैं कि जब तक आप किसी भाषा को या किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये मानने को तैयार ना हो कि वो ज़्यादातर जो बातें वो कह रहा है वो सही होगी. ये एक बड़ी मुश्किल बात है. इसीलिए हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन को कई बार स्टॉप कर देते थे. जैसे हम ये मानते थे कि हमने बहुत सालों तक ये माना कि जो लोग एक प्रकार के धार्मिक विश्वास रखने वाले कट्टरपंथी हैं हम उनसे कॉन्वर्सेशन में एंटर ही नहीं करते. वी ब्लॉक इट आउट. सब लोग कहते हैं कि नहीं आप बड़े कट्टर हैं और ये आप बहुत लिबरल होने पर. बट द प्रॉब्लम इज प्रिसाइसली अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम. The moment you enter into a conversation for general understanding, you are granting legitimacy to that. And therefore, sometimes the blockade is coming because of that. If you allow for that, then again you are in trouble.
and therefore all of us do block certain conversations. Sir, it is only for convenience or? No, what I'm trying to say is that the very conditions of dialogue sometimes actually give legitimacy to the other, and the fact is कि जो मुझे लगा कि आपका आपके स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट था कि as soon as you enter in the dialogue आप मुसीबत में फंस जाते हैं। हाँ मुझे because you start you give legitimacy to the holders of those beliefs. And therefore sometimes, but again the point is that any liberal theory would say कि ये तो बहुत गलत बात है. So, but these are that what I'm trying to say is that these are not just practical problems. They are problems which have a theoretical element. That how do you understand Kant if you already have a theory which rejects the vocabulary? So you have to then allow for multiple constructions of how you are doing that. Tomorrow in the next class what I am trying to do is that आप लोगों ने अच्छा अब मुझे बताइए आप लोग क्या पढ़ के आए थे अभी तक? इंट्रोडक्शन पढ़ के आए थे कि नहीं? उसमें क्या चीज़ आपको लगा जो अभी हम लोग डिस्कस करा उसमें से कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? योगेश क्या चीज़ बताइए? कुछ पढ़ा था? हाँ, तो उसमें क्या चीज़ आपको लगा कि हम लोग को और व्याख्या की आवश्यकता है? ठीक है, ठीक चल रहा है? एनी डिफिकल्टी अखिलेश? ठीक है, हाँ बोलो. Strawson, yeah. Huh. Right, and I don't have the other one, the one that you were actually citing. Right, we are using Norman Kemp Smith. Yes. Yeah. So I don't have that one. So I just want to ask, what exactly is the difference between Strawson's and the original? That subtle difference maybe, if you could point it out. I would say that Strawson is building up a very charitable interpretation, in which also Strawson is rejecting some part of Kant. Say for instance for Strawson the idea of schematism is actually unnecessary. What is schematism? That you have a general category and then you have an instance. But how does that category apply to this particular? So this is, on this if you want to apply the category of substance, then according to Kant there is something which we call schematism. And then he also talks about a threefold synthesis, which will apply the general principle to this, that this is a glass which is a substance which has been caused by silica and certain other things which gives it the form in the others. Now Strawson says that this is unnecessary, you don't need to do that. So there are many such details which he does that. And he has simplified the whole problem in saying that Kant's main problem is only what are the limits of actual and possible experience. While Kant has actually in his own work, in both the editions and in Prolegomena to Any Future Metaphysics, he has said that my problem is actually how are synthetic a priori judgments possible. So one, the language is entirely different. And in that he is saying that how are synthetic a priori judgments possible. He subdivides the question into how are synthetic a priori judgments possible in pure mathematics, how are synthetic a priori judgments possible in natural sciences, and how are synthetic a priori judgments possible in metaphysics. He takes the three versions of that question in Kant's thing. Strawson says कि ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि अनुभव हमें कैसे होता है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी एनालिसिस करें. और जो अभी रजनी मैम कह रही थी वहीं पे वो आंसर मिलता है कि उस रीडिंग के हिसाब से ए प्रायर एलिमेंट्स हमारे वास्तविक और संभावित अनुभव में क्या होते हैं, उनको वो व्याख्यायित कर रहे हैं स्ट्रॉसन के हिसाब से. लेकिन ये बात भी होती है कि जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ए प्रायर हैं, कौन से पोस्टीरियर हैं, ये वाला स्टेटमेंट के लिए कौन सा एक्सपीरियंस चाहिएगा, ये डिटेल्स में ना स्ट्रॉसन जाते हैं ना कांट जाते हैं. So, but the difference is that already by the time you come to Strawson is favoring a reading of Kant which makes him seem like an ordinary language philosopher,
as if he is analyzing our ordinary notion of knowledge, where our ordinary notion of knowledge does have, seems to have the aspiration of both novelty and greater certainty. And then a more linguistic orientation you find in Strawson, which is not there in that. A de-psychologization of Kant, which is again peculiar both to Hume and to Kant, because till that time they are using all of that quickly. But when you come to the positivists, they are, because of Frege and others, they deliberately want to keep away psychology and mechanisms of mental makeup. Yeah. So, a follow-up question. In somewhere in the introduction, Strawson actually mentions that he is not trying to incorporate all the views that followed Kant later on, like the school of Kant that actually was built for the next 100 years. So he's not trying to assimilate and bring them together. My question is, given the fact that Kant himself in the 1780s, the whole decade, kept changing some views about even the language in which he wrote, is he trying to also incorporate the changes of views of Kant himself in that decade, incorporating all that in his bounds of sense? Because he is very clearly mentioning that he is not incorporating the views of the school of Kant, right? So is he the kind of the variation of views that happened in that decade, that particular decade of Kant? Not decades, but centuries, because by the time this is 1780, and Strawson is writing somewhere in 1950, so it's almost 2 centuries. I have a feeling that I would require more reading for that. But as far as, because Strawson but has not a very large volume of work, but as far as let me hazard this. One big tradition, as I mentioned earlier, which actually took up Kant, was the whole tradition of the so-called continental philosophy of existentials and phenomenology. Strawson is absolutely not taking that. So the pluralism thing taking from Kant, the subjecthood and subjectivity taken from Kant by the existentials and phenomenologists is something which is completely not considered by Strawson, and it is impossible that he did not know that. He knew it very well. He is trying to give you a very, very sanitized and logical picture of Kant, that what are the logical presuppositions of knowing, and if we look at Kant, then these are and he's saying that these are the logic, and look at the terminology. He's talking about bounds of sense, all sense as it were, all knowers as it were. While if you look at Sartre, Jaspers, Kierkegaard, they are talking about the individual subject. So that individual subject and his knowing or her knowing apparatus and the conditions, which I'm sure would have all elements of culture, history, personal histories, etc., are very deliberately avoided by Strawson. And I think it is deliberate. Again, a clarification regarding the distinction between analytic and synthetic. Right. As it was taught in our classroom teaching that the definition of analytic is that predicate is contained in the subject is a very bad example. But it was suggested that we can consider the definition of analytic statement as if the predicate is definitionally equivalent to the subject. Is it? Right. So yeah, the more I think the more popular reading was where we said that where the meaning of the subject already contains the meaning of the predicate, that is would be considered to be analytic, and where the meaning. It has also the problem. Right. And that problem, that how it has been brought out by Quine, that it is does not clarify. How do
definitionally, how the problem comes. No, no. The rules of replacement. Right. This is what they are saying. The rules of, if you remember, in I think the fourth section of Quine, he said that when you define it in terms of interchangeability, selva veritat, and replacing one with the other, then you have the well-known problem of Frege and Russell. That is it the reference which would actually extensional reference would do that or not? So no, again no, but we can't take Quine to be the final word. What we are only saying is that we thought that we had a very clear and a good definition of analytic given in terms by the logical analysts and the positivists through the notion of meaning. But then we were very quickly told that actually the notion of meaning itself is not so unambiguous, and the clarifications given to it are either circular or what he calls a closed curve in space, or they are not sufficiently clear. Now, the answer to that in terms of Strawson is also again very brilliant. He says that all definitions in any case will have to be circular. And if they are not circular, then they will be giving you a false definition. So things have to be explained in terms of the familiar and the unfamiliar, and therefore the demand which Quine is making is actually a wrong-headed demand. Therefore, now if we take this discussion further, then what happens to Quine? Quine also, like Gerald Cards, is still accepting that analytic in English, analytic in Hindi, analytic relative to a language is sensible. But analytic in general, which is actually categorically different from synthetic and is not continuous with that, is something which he is rejecting. क्योंकि मोटे तौर पर वो तो आपने देखा ही कि वो ये कह रहे हैं कि जो लॉजिकल ट्रूथ है, a married man is not an unmarried man, या a bachelor is an unmarried man, इसमें वो ये कहते हैं कि अगर अब आपको लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स का अन का और इन सब का मतलब पता है तो ये तो ठीक ही है. लेकिन जो बाकी सेंटेंसेस हैं जिनको आप एनालिटिक मानते हैं, उनको हम इस पैराडाइम पे इलिमिनेटिंगली नहीं समझ सकते. स्ट्रॉसन का ये कहना है कि भाई अगर आप लॉजिकल ट्रूथ्स को समझने को लिए तैयार हैं तो हम बाकी एनालिटिकल स्टेटमेंट्स को लॉजिकल ट्रूथ में रिड्यूस कर सकते हैं. तो आप ये क्या डिमांड बना के बैठे? पर मेनली जो स्ट्रेंथ है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, Quine in his discussion rarely mentions, apart from the introduction, he mentions Leibniz, Kant and Hume. But when he is giving you those 5 formulations, he doesn't mention Kant at all. He only mentions Leibniz, who is wrong in giving you that all it's exhaustive. वो बाकी, it's not a rejection of Kant. तो एनालिटिक सिंथेटिक का जो यहाँ पर वो डिस्टिंक्शन मेंटेन कर रहे हैं, वो एक दिक्कत जो सामने हम लोग को आ रही है, वो अभी दिक्कत हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं. अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे अगर हम अभी से दिक्कत करने लगेंगे तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे. अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एनालिटिक जजमेंट्स वो हैं जो अपने आप में प्रेडिकेट सब्जेक्ट में कंटेंट होता है. एप्राराई वो है जिसकी की पहचान या निशानदेही क्या करती है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई समथिंग एज एप्राराई? इफ इट इज necessary and if it is strictly universal. So then he says what is a very good example of knowledge with that which is synthetic a priori. Synthetic a priori कौन से हैं? जिनमें कि आपको elements of novelty भी है और a priori elements है जो कि आपको knowledge के द्वारा, जो आपकी बुद्धि के द्वारा प्रोवाइड किए गए. ये जो a priori elements हैं ये आपके अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन इनके बिना आपको knowledge नहीं हो सकती. और जैसा हमने कहा, ये तीनों अर्थ ए प्राइori का अनुभव के पूर्व, अनुभव निरपेक्ष और अनुभव की शर्त, इनमें ये दो बातें जो आज रजनी मैम के सवाल से बार बार ये बात साफ हो रही है, ये दो अर्थ यहाँ पर क्रूशल हैं. अनुभव निरपेक्ष होना की बात कहाँ आती है कि जिसके सत्यता को निर्धारित करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है, और अनुभव की कंडीशन के रूप में क्या है, वो एलिमेंट्स ए प्राइori एलिमेंट जिनके के माध्यम से आप अनुभव को करेंगे. And this I think is very clear, very, very important. And I'm glad that she is asking this question. That the elements which are required for all knowledge, these a priori elements. This is a special, peculiar use of the term a priori by Kant.
The other use which continues with the logical positivists and even today is that which is where experience is not relevant to the determination of the truth of the statement. That is about the truth value condition of a statement. Now, और फिर बात मैं दोबारा उस बात पर आऊँगा. ट्रुथ वैल्यू कंडीशन के लिए एक प्रायर कंटेक्चुअल कंडीशन में वो सारे कैटेगरीज तो चाहिएंगे. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में तो ये सारे आपके जो आपका स्पेस और टाइम और बिना कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी वाक्य नहीं बना सकते, और वो एप्रायरी कंट्रीब्यूशन है. अब उनसे जो आपने वाक्य बनाया उनमें दो तरह के वाक्य हैं, एक जो फर्दर अनुभव के द्वारा सत्यापित होंगे और एक वो जिसके लिए अनुभव की अपेक्षा नहीं है. तो स्टेटमेंट मोडालिटी के रूप में एप्रायरी जहां इस्तेमाल हो रहा है वो एक बात है, एप्रायरी शब्द का प्रयोग, और एक एलिमेंट्स ऑफ एप्रायरी जो आपके एलिमेंट में. और यही दिक्कत है कि जब आप एप्रायरी को जन्मजात मान लें या अनुभव निरपेक्ष मान लें या अनुभव की शर्त मान लें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वेयर इज इट अप्लाइंग, क्योंकि नहीं तो फिर आपको वही बात लगेगी जो आप कह रहे थे कि देन इट विल फॉलो कि अगर एप्रायरी एलिमेंट वहाँ पर होता है फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में, तो देन इट शुड ऑटोमेटिकली गारंटी दैट ऑल स्टेटमेंट दैट वी मेक यूजिंग दोज मस्ट बी ट्रू. But that is not the case because the a priori element in knowledge and the a priori justification of individual statements are not the same. परेशान हो गए सब लोग? बहुत होते हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं, और इस बात से हमको बहुत ही परेशानी होती है कि हमको इतने साल बाद भी लगता रहता है कि I fail as a teacher if I am actually not able to help you to see these distinctions. Because these are very important distinctions, and unless you see these distinctions, then you are not able to then have a philosophical problem. So we have to see what Kant is saying. We have to understand the language which he is saying. Again, our problem is that we are doing it in 2023. He wrote it in 1780, and he wrote it in German. He did not know English. We also don't know English. So we have so much of difficulties. Any questions? Yes, please.